Gwadar imbroglio. Dr. Noman Ahmed. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 4, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Disturbing news has been emanating from Gwadar for several weeks now. People led by a political leader have been demanding their basic rights. Access to fishing in their own waters, the security of tenure of fisherfolk settlements, greater inclusion of the local population in the job market, limiting the role of security forces in daily city affairs, and the provision of proper healthcare and education are not new demands. They have echoed since Gwadar was identified as the next important port after Karachi. Seaports and the activities they generate attract sizable numbers of external workers and investors. The local population loses its preferential status in economic development. Thus, the demands of the people of Gwadar are justified. Although PEC's footprint is evident in many parts of the country, Gwadar, for those in Islamabad, seems to be the barometer of progress for the project. Protesters in the Makran coastal region argue that hundreds of large trawlers continue to fish in deep waters without check. They even catch the small fish through prohibited nets and advanced technology. The local fishing community is dependent on traditional subsistence fishing practices, and in the presence of the trawlers, are deprived of fishing opportunities. Local fishermen fear that poverty and hunger will increase, impacting the fishing communities of Gwadar, Pasni, Kad Kucha, in Mostung, Awaran, Kuzdar, and the adjoining locations. The protesters also criticize the heavy presence of security personnel and their activities. Thousands of security personnel have been deployed to protect the Chinese from targeted attacks. The entire region has many checkpoints and surveillance installations, which are difficult for ordinary folk to navigate. Often, instances of mistreatment by security personnel are reported, exacerbating divisions between the administration and the people. Disappointingly, mainstream political parties have not engaged meaningfully with the people. Those who believe in Gwadar's significance for Balochistan and national prosperity find the situation unacceptable. PEC's real benefits will remain elusive if this impasse continues. The demands of the residents of Gwadar are not new. The option of a deep-sea port on the Makran coast was originally conceived in 1964, but proper studies started in 1974. The development of Gwadar port was an essential component of Pakistan's 8th five-year plan, 1993-98. Technical and financial feasibility studies led to the decision to develop the port. The port became operational in 2016. At its inauguration, the then Balochistan chief minister said that the Baloch would have greater control and ownership of the assets in the province. It was announced that some 24 ships would call at the port in the near future. That meant instant employment for skilled and unskilled labor, and other economic opportunities for the local people. Unfortunately, the promises never materialized, and benefits such as Gwadar's proximity to Iran's Chabahar port and the Hormuz Strait were never tapped. There is no denying that several powerful interest groups at the regional and global level are against CPEC and Pakistan's China policy. Our establishment and successive regimes have attempted to protect this vital tenet of our foreign relations. But still, there have been several blunders. Baloch society is least engaged in the Gwadar project. Decisions on CPEC and Balochistan are made without taking into account the interest and priorities of the local residents. Take the case of the Smart City Master Plan for Gwadar, which was completed and approved by the provincial government some time ago. The plan was prepared by consultants who did not pay heed to local requirements. For a very long time, the local people have been demanding that their access to the sea through traditional harbor routes be safeguarded. As fishing is the main activity of the people of Gwadar, local communities have been very wary about administrative control. They believe that with the proposed development projects, the entire control of the fishing enterprise will be transferred to foreign investors and companies. Besides, Gwadar is a small town with a population of some 200,000 people.
The master plan projects high-density, high-rise developments. It is feared that once the investment boom lands in Gwadar, the main beneficiaries will be international investors. The local population will lose their advantage and may become a minority in their own district. There is no socio-economic safeguard for them, given the weak political clout they wield. Social and physical infrastructure has not seen any upliftment. People travel to Quetta or Karachi to seek healthcare and education. It is in the larger national interest of the government to address these issues and politically engage with the communities, and show them that it truly wants to introduce meaningful reform. The writer is an academic and researcher based in Karachi. Published in Dawn, January 4, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. गवादर से कई हफ्तों से परेशान कुन खबरें आ रही हैं। एक सियासी रहनुमा की क़यादत में लोग अपने बुनियादी हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। उनके अपने पानियों में माही गिरी तक रसाई, माही गिरों की बस्तियों की मुद्दत का तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार की मंडी में मकामी आबादी की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत, रोज़मर्रा के शहरी मामलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को महदूद करना और मुनासिब सेहत की देखभाल और तालीम की फ़राहमी कोई नई मांग नहीं है। कराची के बाद गवादर को अगली अहम बंदरगाह के तौर पर शनाख्त किए जाने के बाद से उनकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बंदरगाहें और उनसे पैदा होने वाली सरगर्मियां बैरूनी कारकुनों और सरमायाकारों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। मकामी आबादी माशी तरक्की में अपनी तरजीही हैसियत खो देती है। इस तरह गवादर के अवाम के मुतालिबात जायज़ हैं। अगरचे सीपैक के नक़ूश मुल्क के बहुत से हिस्सों में वाज़े हैं, लेकिन इस्लामाबाद के लोगों के लिए गवादर इस मंसूबे के लिए पेशरफ्त का पैमाना मालूम होता है। मकरान के साहिली इलाके में मुजाहिरीन का कहना है कि सैकड़ों बड़े ट्रॉलर्स बगैर किसी जांच पड़ताल के गहरे पानियों में मछलियां पकड़ रहे हैं। यहां तक कि वो ममनुआ जालों और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए छोटी मछलियों को भी पकड़ते हैं। मकामी माहीगीर बरादरी माहीगीरी के रिवायती तरीकों पर मुनहसर है और ट्रॉलर्स की मौजूदगी में माहीगीरी के मौके से महरूम है। मकामी माहीगीरों को खदशा है कि गुर्बत और भूख में इजाफा होगा, जिससे गवादर, पिसनी, खडकूचा, मस्तौम में, आवारान, खुजदार और मुल्हका इलाकों की माहीगीर बरादरियां मुतासिर होंगी। मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी एहलकारों की भारी तादाद में मौजूदगी और उनकी सरगर्मियों को भी तनखीद का निशाना बनाया। चीनियों को टारगेटेड हमलों से बचाने के लिए हजारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। पूरे खित्ते में बहुत सी चौकियां और निगरानी की तंसीबात हैं, जो आम लोगों के लिए तशरीफ ले जाना मुश्किल है। अक्सर सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से बदसलूकी के वाक़यात की इत्तला दी जाती है, जिससे इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान तकसीम में इजाफा होता है। मायूस कुन बात यह है कि मरकजी धारे की सियासी जमातों ने अवाम के साथ बामानी बातचीत नहीं की है। जो लोग बलूचिस्तान और कौमी खुशहाली के लिए गवादर की अहमियत पर यकीन रखते हैं, वो सूरत हाल को नाकाबिल कबूल समझते हैं। अगर यह तातुल जारी रहा तो सीपैक के हकीकी फ़वाइद मदूम होकर रह जाएंगे। गवादर के बासियों के मुतालिबात नए नहीं हैं। मकरान के साहिल पर गहरे समंदर की बंदरगाह का ऑप्शन असल में 1964 में तस्वुर किया गया था, लेकिन मुनासिब मुताला 1974 में शुरू हुआ। गवादर बंदरगाह की तरक्की पाकिस्तान के 8वीं 5 साला मंसूबे 1993-98 का एक लाजमी जुज़्व था। तकनीकी और माली फिजिबिलिटी स्टडीज के नतीजे में बंदरगाह को तैयार करने का फैसला किया गया। ये बंदरगाह 2016 में ऑपरेशनल हुई थी। इसके इफ्तिताह के मौके पर इस वक्त के वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा था कि सूबे में मौजूद असासों पर बलूचों का ज्यादा कंट्रोल और मलकियत होगी। ये ऐलान किया गया था कि मुस्तकबिल करीब में तकरीबन 2 दर्जन बहरी जहाज बंदरगाह पर काल करेंगे। इसका मतलब हुनरमंद और गैर हुनरमंद मजदूरों के लिए फौरी रोजगार और मकामी लोगों के लिए दीगर माशी मौके थे। बदकिस्मती से ये वादे कभी पूरे नहीं हुए और गवादर की ईरान की चाबहार बंदरगाह और आबनाए हुर्मुज़ से कुर्बत जैसे फवायद को कभी पूरा नहीं किया गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इलाकाई और आलमी सतह पर कई ताकतवर मुफादाती ग्रोह सीपैक और पाकिस्तान की चीन पॉलिसी के खिलाफ हैं।
हमारी इस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने हमारे खारजा ताल्लुकात के इस अहम उसूल की हिफाजत करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कई गलतियां हुई हैं। बलोच मुआशरा गवादर मंसूबे में सबसे कम मसरूफ अमल है। सीपैक और बलूचिस्तान के बारे में फैसले मकामी बाशिंदों के मुफादात और तरजीहात को मद्देनजर रखे बगैर किए जाते हैं। गवादर के लिए स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान की ही मिसाल लीजिए, जिसे कुछ अरसा कबल सूबाई हुकूमत ने मुकम्मल और मंजूर किया था। ये मंसूबा कंसल्टेंट्स ने तैयार किया था, जिन्होंने मकामी ज़रूरियात पर तवज्जो नहीं दी। एक तवील अरसे से मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि रिवायती बंदरगाहों के रास्तों के जरिए समंदर तक उनकी रसाई को महफूज बनाया जाए। चूंकि माहीगीरी गवादर के लोगों की बुनियादी सरगर्मी है, लिहाजा मकामी बरादरियां इंतजामी कंट्रोल के बारे में बहुत मोहतात रही हैं। उनका मानना है कि मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों के साथ माहीगीरी के कारोबार का सारा कंट्रोल गैर मुल्की सरमायाकारों और कंपनियों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा गवादर एक छोटा सा कस्बा है, जिसकी आबादी तकरीबन 200,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मास्टर प्लान आला कसाफत बुलंद इजाफे की तरक्की का मंसूबा बनाता है। खदशा है कि गवादर में सरमायाकारी में तेजी आने के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों को होगा। मकामी आबादी अपना फायदा खो देगी और अपने ही जिला में अक़लियत बन सकती है। कमजोर सियासी असर और रसूख को देखते हुए इनके लिए कोई समाजी और इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। समाजी और जिस्मानी बुनियादी ढांचे में कोई बेहतरी नहीं देखी गई है। लोग सेहत और तालीम के हुसूल के लिए क्वेटा या कराची का सफ़र करते हैं। ये हुकूमत के वसीतर कौमी मुफाद में है कि वो इन मसाइल को हल करे और बरादरियों के साथ सियासी तौर पर मुंसलिक हो और उन्हें दिखाए कि वो वाकई बामानी इस्लाहात मुतारफ़ करवाना चाहती है। मज़मून निगार कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक माहिर तालीम और मुहक्किक हैं। डॉन अखबार में शाये शुदा 4 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.